Hello, hello, hello. How are you? All good. What's up? कैसे चल रहा है? Glad Arey, to be here on Brew bas. Your Market. I know. Finally, I've been thinking to call you as a guest, and finally it's happened. I'm glad like you could even come in like such short notice. I just pinged you like, hey, podcast है, are you free? You were like, हाँ, चलो, let's do this. मैं बोल रही थी कि हम भी अपने बच्चों को बताएंगे कि Brew Your Market के अच्छा पॉडकास्ट अच्छा। आए थे. अरे मैं बताने वाला हूँ कि अच्छा रागिनी यू नो रागिनी कौशल शी वाज देयर मेरे पॉडकास्ट में शी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद मी फॉर हाफ एन आवर Yeah. Okay. But before we get into all this, why don't you tell the viewers who you are, what your journey's been, and how you even got into like making memes and making content and all the things that you do right now. Who I am तो मतलब मुझे भी नहीं पता है. पर I got into memes because I think मेरे को memes देखना अच्छा लगता था. हाँ But then मैं I'm naturally good at मतलब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए. But I like हाँ मतलब इन जनरल फ्रेंड्स के साथ भी वन लाइनर एंड ऑल मारने में मजे आते सबको ही आते हैं. तो फिर हाँ मैं मीम्स बनाने लगी. फिर मीम्स बनाते बनाते आई गॉट इंटरेस्टेड इन कंटेंट क्रिएशन इन जनरल. देन आई गॉट हाँ इंटरेस्टेड इन स्टैंड अप एंड नाउ आई एम लाइक फुली इन्वेस्टेड इन कॉमेडी. हाँ. Are you doing stand up as well, Abhivi? Because I remember you recorded your stand up एक बार, you even sang एक बार, हाँ and all those हाँ. like. So are you still into this thing with the stand up? I still write songs, but I'm trying to get better at instruments हाँ because मैं से मतलब मैं इतना कोई अच्छी गायिका नहीं हूँ. आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर. आई जस्ट लाइक टू राइट गुड सॉन्ग्स. हाँ और गाना और साथ में इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो आई थिंक आई डू इट लेटर एक दो साल बाद जब थोड़ी अच्छी हो जाऊं. हाँ. बट आई डू डू स्टैंड अप्स अभी भी. नॉट दैट रेगुलर. Hmm. बट अभी फुल कंसंट्रेशन यूट्यूब पे है. Arey, I like your songs. What are you saying? Itna like I'm not that good at like singing and playing the guitar. I love those like random this thing with that chord strumming and like you singing. That was good. Yeah, it was good as an experiment, but I think I can be better. ऐसा है. Of course. So, okay, then why do you tell like uh how do you tell the viewers, sorry, how do you manage to stay consistent on the platform, right? Because this is something that I've seen you do, wherein like I know we briefly spoke about this as well, like long ago, and I see you post like so many posts at once every single day. And like, how does she get the time and how does she even get the ideas or like the energy or like even make them? What's your process? Uh, देखो पहली बात तो I'm not consistent at all. What? ठीक है. हर दिन तो पोस्ट मीम्स करती है तू. बनाने में I think you think I'm consistent because I'm consistent in making memes. क्योंकि मैं हम्म. हर मतलब एक घंटे में एक आध दो मीम जो भी दिमाग में आता है काम करते करते फोन उठा के बना दिया और छोड़ दिया. फिर वो हाँ पोस्ट तो तुम कभी भी कर सकते हो ना. कितने हाँ. जब भी फ्री होगे तो एक साथ 10 मीम डाल देती हूँ. इसलिए यू थिंक आई एम कंसिस्टेंट बट आई एम नॉट दैट कंसिस्टेंट एक्चुअली. और ओपन टैब वाला सीन हो जाता है ना. जैसे तू खुद भी नोटिस करना. अब जब तू मार्केटिंग की पोस्ट डाल रहा है तो एक साल कंसिस्टेंटली रोज एक पोस्ट अगर सोचेगा तो हम्म. आफ्टर अ फ्यू इयर्स देखो वो ओपन टैप आ जाएगा. मतलब यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग ऑन द स्पॉट एनी टाइम. Acha, so that's how you also like. I mean, it just comes naturally to you, Abhi, like all these memes and all these jokes when you see a new format. या मतलब अब मतलब ऐसे फ्लो बैठ गया ना. इट्स एन ओपन टैप नाउ. आई हाँ. कैन थिंक ऑफ एंड कुछ भी किसी चीज पे भी अब कुछ भी उल्टा सीधा करके जोक बना दो. और मीम्स आई थिंक इजियर भी होता है. मतलब हाँ यू कैन लाफ एट एनीथिंग. हाँ. तो वही सीन है. Perfect. And then, like, I mean, एक और चीज था like that I was very curious about when I was looking at your content. पहले तो you were very edgy, and I remember you even getting banned also. How did you like move to like not being so edgy and being more kind to the audience? यार या आई थिंक व्हेन आई वाज वेरी एजी हाँ. वो ऐसा था कि आई आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फाइंड पीपल हु रिलेट विद माय थॉट प्रोसेस. Mm-hmm.
तो उस टाइम के लिए वो एजीनेस, वो नीश होना और ठीक है चलता है, पर अब हम्म। ऐसा हो गया कि अब इंसान ग्रीडी हो जाता है ना, ग्रीड बढ़ गई कि और लोगों को पसंद आए मेरा कंटेंट और हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग हंसे। तो हाँ। अब वो ज्यादा हो गया है। आई थिंक पहले मैं अपने लिए कर रही थी, अब मैं बाकियों के लिए कर रही हूँ। डू यू स्टिल मिस दैट? क्योंकि लाइक just as you mentioned, I love that quote. अभी अपने लिए कर रही है, like पहले you were doing it for yourself, अभी you're doing it for the crowd ना कि, and that's something that I've heard like a lot of creators also say, that content creation is becoming more for the algorithm and less as an art, or like as less for you हाँ as you started. So do you still miss that, and what are your thoughts on that? Like, हाँ, आई डू बिलीव दैट कंटेंट क्रिएशन हैज बिकम फॉर द एल्गोरिदम। जैसे आप देखो कि इंटरनेट की, सॉरी, इंस्टाग्राम पे mm-hmm, अब एक बंदी लिपसिंग करती है तो फिर 100 बंदियां लिपसिंग करने लग जाती है, हाँ, बिकॉज दैट हम्म, इंस्टाग्राम इज पुशिंग दैट। हाँ, बट जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है टू कम इन द मेन स्ट्रीम, बट जब वो मेन स्ट्रीम पे में आते हैं तो पीपल दे हैव अ वेरी लॉयल फॉलोइंग। जैसे हाँ, साइमन सेज का, आई डोंट नो, डू यू नो साइमन सेज? yeah, mm, तो he took like 3 years or I think 1 year or 2 year to get 1 million। पर oh, उसके जो फॉलोअर्स हैं, अगर तुमने उनके सामने साइमन सेज को कुछ बोल दिया तो फिर वो चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, दे नॉट गोना लेट यू लिव। तो हाँ. आई थिंक सबका अपना होता है कि या यू कैन फीड इनटू द एल्गोरिदम और यू कैन क्रिएट योर ओन स्पेस। But do you तो miss that? What do you prefer? Like, I mean, व्हाट डू आई प्रेफर? आई थिंक आई प्रेफर मेकिंग, आई प्रेफर मेकिंग मेन स्ट्रीम स्टफ, mm-hmm, mm-hmm, because when I'm making stuff that's only for myself, I feel like that's an echo chamber। mm-hmm, और उसमें फिर मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं किसी और के लिए कुछ बना रही हूँ कि ये जो कंटेंट का पार्ट है ये किसी और को फनी लगे, तो फिर मैं उसके हिसाब से सोचूंगी, उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से सोचूंगी। mm-hmm, अगर मैं बस अपने लिए बना रही हूँ तो फिर उसी में रह जाऊंगी, मतलब हाँ, दैट्स माय लिमिटेशन देन। वही वो भी है. तो That's आई true. प्रेफर मेन स्ट्रीम मोर। Does it ever become difficult for you to explain memes and references, or like what you do to people, or like even घर पे and all that? Like how is that happening? Because I remember when we were speaking long ago, like you were saying, people used to ask you meme के references, and you used to get annoyed. तभी अभी your memes are even more crazier. So how do you deal with that? देखो, karma बहुत ही बुरी चीज है। पर आता तो सबके लिए है। हाँ. मेरे तो देखो, सुल्तानी पता है ना, वो तो अब तक बोलते तू करती क्या है, मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को तो तेरा एक भी मीम नहीं समझ आता। तू समझाती क्यों नहीं हूँ? पर नहीं, अगर मतलब अगर किसी को एकदम ही ऐसा मीम डाल दे जो किसी को नहीं समझ आया तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अदरवाइज नाउ आई अवॉइड पुटिंग वेरी नीश मीम्स जो 5 लोगों को समझ आएंगे। ये कोई ज्ञान का वासपुर नहीं बन रही यहाँ पे। Uh, got it. So, I mean, okay, define cancel culture. Like, what does it mean? पहली बात तो, before you even dive into that. I think it just means a check of power for people who have a lot of support. Mm-hmm. Just a reality check for people at the top. I feel that. Mm-hmm. Is it being abused also now? Like, what's your thoughts on that? Like, I know that it is a check of power and stuff, but what are your thoughts about like people just using it like for the fuck of it, especially in India? देखो, अब्यूज तो हर चीज होती है। Mm-hmm. मतलब हर everybody abuses everything, like it's even feminism is abused, Hmm. and even the males movement is abused। उसको मेरे को पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मेनिनिज्म तो बहुत अजीब साउंड कर रहा First of all, I है। mean, to be honest, like I don't understand why there's a males movement, because males are already on top. I don't necessarily know why they need a movement, but yeah, continue. आई थिंक वेस्ट में जरूरी है, पीपल इन द वेस्ट डू नीड इट, पर इंडिया में मतलब डोमेस्टिक इंडिया में वायलेंस बड़ी पेट्रियार्की crazy है। ऑलरेडी है. व्हाट द हेल, इंडिया जब इंडियन लड़के बोलते हैं ना कि मेन आर ट्रीटेड सो बैडली, Like, ओके, yeah. Uh, देन आस्क
Yeah. So you were saying, sorry to cut you. हाँ, what was I saying? Like about like this in cancel culture and like how it's being हाँ, abused. हाँ. हाँ, तो मेरे को लगता है जैसे सलमान खान है, Hmm. अभी वो उसको जेल में होना चाहिए, ठीक है, पर उनको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ. और चलो, अब मेरी फील्ड में नहीं है सलमान खान, पर लुई सी के ले लो अभी, हाँ. been cancelled 2-3 times for like Chappelle भी. doing Hmm. the like horrible stuff, Hmm. but he's still thriving, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। डेव शपेल भी कैंसिल हो चुका है, पर हर 10 साल में उसका आ ही जाता है स्पेशल। तो आई हाँ. थिंक पीपल हु आर ट्रूली गुड विद देयर क्राफ्ट, एक्सेप्ट लुई सी के, वो उसका मेरे को पता नहीं, ठीक है, लुई के इस उसमें नहीं आता, पर इफ यू रियली गुड और तुम थोड़ा मतलब इफ यू आर सेल्फ अवेयर, तो Hmm. दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कैंसिल नहीं कर सकती है। और अगर तुमने कुछ ज्यादा ही नॉनसेंस ना की हो, तब Hmm. तुम कैंसिल नहीं हो सकते। अगर इफ यू मर्डर्ड समबडी देन यू कैंसिल, सॉरी। वही मैं पूछने ही वाला था लाइक डू पीपल रियली गेट कैंसल क्योंकि लाइक बहुत लोग करते ये लाइक ओ या दिस पर्सनस गॉट कैंसल्ड एंड देन दे लाइक या दे जस्ट कम बैक राइट आई नो इनिशियली इट डिड हैव दैट power where people they were considered as kryptonite radioactive just don't work हाँ, with them but now does that really happen? नो, अब नहीं No. हो सकता, Yeah. Huh. अब नहीं हो So, सकती, पर बाउंस बैक यार, और मतलब थोड़ा ज्यादा या तो जेल में ही डाल दो, uh, लाइक put them in the prison, then it's fine. But अब ये भी तो है ना, ओजे सिम्पसन। उसने exactly. OJ. The biggest. बुक की लिख दी, इफ आई डिड इट, मतलब it was Funny just thing a for fucking some. review. Like, and you also got cancelled, boycotted, and like, I'm not boycotted per se, but you got cancelled out of these Twitter and chess.com also. Why did you get cancelled out of chess? पहले ये बता. And then like, अरे चेस what? पे ना मेरी गलती नहीं थी। चेस पे ऐसा होता है कि जब तुम चेस खेल रहे होते हो ना, तो ये जो ब्राजील ब्राजील के लौंडे होते हैं ना, ये पता है क्या करते हैं? इफ यू टेक देयर क्वीन, दे लीव द गेम, एंड देन यू हैव टू वेट 15 minutes फॉर द Huh, न्यू पर्सन टू प्ले द गेम। okay. तो अगर मैंने पहले 1 मिनट में इसकी क्वीन ले ली, तो वो छोड़ के चला जाएगा गेम, और मैं एक 15 मिनट तक million बैठी cases. रहूंगी, कौन मेरे साथ चेस खेलेगा। तो ऐसे में 3-4 बार 5 बार हो गया, फिर मेरे को आ गया गुस्सा, और फिर जो नेक्स्ट छठे वाले ने किया, उसको मैंने दे दी गालियां, और उसने करके अच्छा. मेरा मेरा हो गया था। तो वैसे मतलब काम करके उठी हूँ, और आई वाज इन एनी वे वेरी एजिटेटेड दैट डे, और मैं उसको फुल गालियां दे दी हिंदी में, मतलब फुल ये वो, तेरा पूरा खानदान, तेरा एंसेस्ट्रल ट्री ऐसा है वैसा है। और फिर उसको रिपोर्ट कर दिया। फिर chess.com ने वालों ने बोला भाई निकलवा। Oh shit. अच्छा तो वो था स्टोरी but then like how does that like how do you come back उसके बाद you got back ना. हाँ, तो मेरे 9 emails अच्छा. निकले तो ना है। हाँ वो भी है. But does your like I mean like I'm just saying hypothetically like if people get cancelled does having like this loyal base help you come back as well because we've seen like uh people this thing with that like their group where one group is saying boycott another group is saying no and advocating for them right so you see that happening as well like आजकल like in India. या अभी ये जो शाहरुख है, उसके लिए भी तो यही हुआ। Hey, हाँ. तो But do you आई think थिंक योर it's बॉडी ऑफ वर्क स्पीक्स फॉर यू। do you think it's being used as a tool, as a marketing tool abhi? Like this boycott, because like Shah Rukh ki movie ka, har, like you take any movie, everything is getting boycotted आजकल. या या इट्स टूल, मैं खुद यूज करती हूँ। How do you use it? तू खुद कैसे यूज करती है? जो अनफनी जो लड़के आते हैं मेरी रील्स पे अनफनी लिखने, उनको रिप्लाई करके फिर 10 कमेंट आ जाते हैं उनके, Women. हाँ. एंगेज, हाउ कैन यू डू दिस। ओके भाई, थैंक्स। I even saw that Bo Krishna wala meme. Like that got a lot of engagement. I saw it on my feed for like 3 days. 3 दिन लगातार मेरी feed पे आ रहा है. I'm like, why is it coming on my feed so many times, यार? Oh my बट God. बात तो सही है यार, मतलब उसमें गलत क्या है? हाँ.
Let's not get into that. हाँ प्लीज ये क्लीन रखते हैं. हाँ. So tell me about this. How is content changed in the country right now? Like especially digitally because of like such cancel culture and stuff. Like are people more afraid now to create content? Like are you? I mean, I know you're not, but yeah. डरती तो मैं भगवान से भी हूँ, पर आई थिंक पीपल शुड बी अफ्रेड. Uh-huh. बिकॉज और अगर तुम एंड पीपल ऑल्सो हैव टू चेंज विद द टाइम्स ना. मतलब जैसे अब ये कॉमेडियंस हैं, जैसे मैं जब खुद स्टैंड अप शोज अटेंड करती हूँ, Mm. तो द फैट पर्सन इज गेटिंग लाफ्ड एट. आई Yeah. एम सॉरी, द इफ यू आर फैट, इफ यू आर टू डार्क, और इफ यू आर टू जो भी जिस पे भी यूजुअल जोक्स बनाते हैं, Mm. तो मेरे को खुद भी पसंद नहीं आता, बिकॉज समटाइम्स दोज पीपल आर माई फ्रेंड्स. Yeah. तो आई थिंक ऐसा अगर तुम सबको बुला के यूर ट्राइंग टू डू स्टैंड अप एंड योर इंटेंट इज टू मेक एवरीबडी हैप्पी, एंड 2-3 people are not happy in that process, तो I don't think you're very successful. Mm. और अगर तुम इस सब अपना जो कंटेंट है उसका जो डायरेक्शन है वो इस सब से हटा के यू कांट थिंक ऑफ समथिंग न्यू, तो Mm. देन मे बी यू आर ऑल्सो नॉट टैलेंटेड Yeah. इनफ. But मतलब then ये मैं किसी और को नहीं बोल रही, अपने लिए बोल रही हूँ. पर मतलब क्योंकि मैंने भी खुद अपना कंटेंट चेंज किया है, सो नोबडी गेट्स हर्ट. और Hmm. वो अभी तक मैं करती हूँ कि आई ट्राई नॉट हर्टिंग एनीबडी. But is that इट possible? Because like I was watching this interview by Larry David, like on Curb Your Enthusiasm K interviews and all that when he was doing it. He was telling that like how can you not offend a group, any group? Like I mean, if you're doing comedy, because he was saying that like in Curb Your Enthusiasm also he's fucking shat on Palestinians, he shat on Jews, he being a Jew, he's done so much, right? And people have asked him about it, and he's like you're in comedy, you're going to offend someone or the other because otherwise there's no comedy. What are your thoughts on that? देख, लैरी डेविड का ना सीन अलग है. Huh. ठीक है, बिकॉज पहली बात तो उसके पास इतनी सारी गुडविल है. और फिर when Larry David does it, he doesn't do it in a way where he intentionally wants to hurt someone. जैसे बिल बर्र भी है अपना, वो भी पूरा दिन रैंट करता है, पूरा उसका पूरा सेट ही I रैंट होता है. love Bill Burr. Yeah. I also love him, but he is ranting his heart out, and that should offend everybody in the crowd, but it doesn't. तो Yeah. वो उन दोनों का इंटेंट ऐसा है, और वो जो बोलते हैं वो जेन्युइनली फनी भी होता है. But तो but that can also be with a normal comedian also, no? Like in India, like I mean, like उनका intent भी वही हो सकता है, but then people might be taking it कि अच्छा why have you taken offense? Like what? Just thinking out loud. I don't know. देख, कुछ कुछ ने ऐसा किया है. ठीक है, कपिल इज द वन जिस पे बहुत जो बहुत ऑफेंसिव जोक्स मारता है, पर ही स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, हाँ. because he has that goodwill of so many shows, so many नहीं एक ही शो बट for so long. तो Yeah. he has that goodwill. पर Mm. जब वो समय रैना ने वो अबॉर्शन वालों को बोल दिया, तो उसकी निकल गई थी वहां से, Mm. सब उसके पीछे पड़ गए थे, because he doesn't have that goodwill yet. हाँ हाँ तो हाँ अगर तुम्हें करना है, इतना ही चुल मची है कि मुझे किसी को ऑफेंड करना ही है, हाँ. तो then generate that goodwill and then you can do whatever you want. Until then इस सबसे दूर रहो. Got it. That's something that even Tanmay also did, no? Like, I mean, although he had like small amount of goodwill, he spoke about Lata Mangeshkar and all those Snapchat filters and he got cancelled the fuck out. But he's back. But still. पानी में डूबी हुई इलायची, पता नहीं क्या. यार वो वाला इस वाले पर मैं नहीं बोलूंगी. हाँ, अभी हाँ. So, okay, tell me about this. Like, do you think people are very uptight right now? Because, like, I see everybody moving towards that, like, especially in our country, right? Like, the is uptight, especially about women-centric content. Like, you would know more about it because you post anything pro-women now, like on your page, you see, oh, women with that chai wala emoji or like unfunny and stuff like that. Oh, what about men and stuff like that? What are your thoughts on that? My thoughts are that thank you for the engagement. Okay, I love that.
नहीं पर यार देखो, मैं थोड़ी ना एम्पैथेटिक हूँ इन लॉन्डो से जिनको लगता है कि विमेन का इमोजी लिखना बड़ा फनी है, बिकॉज इट्स कमिंग आउट ऑफ ईगो, और खुद किसी बंदी ने रिजेक्ट विजेक्ट किया होगा, वहां का बिल्ट अप स्ट्रेस यहाँ निकाल रहे हैं. तो आई डू फील बैड अबाउट देम, बट आई डोंट रियली केयर एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग एंगेजमेंट फ्रॉम देम. हाँ, I think it's all via that sucked Londa wala thing, like after Zakir's wala thing. हाँ. हाँ, Because ये जाकिर मेरे को इसलिए पसंद नहीं है, उसने इतने सख्त लौंडे बना दिए हैं ना, वो सख्त हाँ, लौंडे नरम लौंडियों को तंग कर रहे हैं. हाँ. I like Zakir, but I still like. it's a bit weird to, Hmm. why you as a man are sitting on the internet commenting shit on women's profiles. I think it's all about like the eyeballs, getting more eyeballs. Like take Andrew Tate also. I don't know him as a person, but I'm sure like I don't think I think most of his content is just for the internet. Just to get like this polarizing views, because like in marketing they say that like you take a polarizing topic, your marketing campaign will take off, right? Yeah, yeah, definitely. मेरे को, हाँ, I didn't know ये marketing में भी सिखाते हैं. Hmm. पर I इन mean, जनरल ह्यूमन फिलोसफी भी अगर आप देखो तो जो right. ऐसे बेस्ड लोग होते हैं ना, उनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग होती है इन Uh, जनरल. And हिटलर. हाँ, हाँ, वही, हाँ. So, okay, tell me about this. Like, what are your goals with respect to creating content? Like, why are you creating Abhi? Like, My goal is to reach as many people as possible. okay, why? Like, I mean, why do you want to reach so many people? Validation. अच्छा. और क्या रीजन हो सकता है यार, Yeah, मतलब like I mean, कोई. people say they're building a distribution network, like how Mr. Beast started off with like comedy and like he built his distribution. Now he's has that Mr. Beast burger, etc. So हाँ, वो सब भी yeah, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी, पर ऐसे स्टेपिंग स्टोन होता है ना कि ये मिल गया, उसके बाद सोचेंगे फिर. no, I love the candid answer though, like validation, because that's what everybody is here for. Like if you think हाँ, about it, if you're creating content, it's just so that your voice is heard. No. एग्जैक्टली. और इतने सारे तुम्हारे जोक पे हंस रहे हैं, उसमें एकदम ईगो फीड हो जाता है एकदम. Oh shit. कभी लगा है, like I mean when you put a lot of effort on a joke and it's not landed, it's bombed. Like what do you do then? Do you like delete the post or what do you do then? नहीं इतना. आई डोंट थिंक आई लुक बैक Uh, कि हाँ, डिड दिस जोक लैंड और डिड दिस जोक नॉट लैंड. अगर ऑफेंसिव होता है तो मैं आई डिलीट इट, बट mhm. यूजुअली आई डोंट डिलीट माय पोस्ट्स इवन इफ दे डोंट डू दैट वेल. Mhm. Do you have any science behind these things? Because like I was speaking to a few comedians, like stand-up comics and all, and they told me that like when they, especially when they prepare us this in comic sketch, they look at laugh per minute and they look at all those things. I don't know like if there is anything that you do in posting or like in your set, but do you take a look at analytics and like data and stuff to like craft your content? Like I mean, say you saw अच्छा women centric content बहुत अच्छा काम कर रही है, so I'll just make more of these content and lesser of something. Do you see all that? मैं पहले करती थी ये, Mm-hmm. पर उससे क्या होता है ना, फिर यू गेट स्टक इन द एल्गोरिथम. Mm. यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग न्यू. Mm. एंड मतलब मेरा ऐसा है कि आई लाइक टू थिंक अबाउट न्यू वेज ऑफ ऑफेंडिंग पीपल. Okay. तो मेरे को उसमें ज्यादा मजा आता है कि कुछ नया सोच. मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ यार, मैं क्या यही सेम मीम, अब जो मीम्स मैं डाल रही हूँ मैं खुद ही बोर हो जाऊंगी एक दिन, एंड आई विल डू समथिंग एल्स. हाँ. So I don't like to get into too much. Don't let the algorithm control you. Control the algorithm. Oh yeah, easier said than done. Control the algorithm. Wow, I wish I had the button for Instagram. I'll put all of my reels in like 1 billion abhi to. यार, control the algorithm. Don't let the algorithm control you. Control the algorithm. I love the way. Yeah. Wow. तो बोलने तो इजी लगता है, पर नहीं.
So, like, who is some of your favorite creators? Tell me about that, and like, what do you like about their content? Like the strategy, or like, what's about them that you like? मैं इतना स्टैंड अप देखती नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट सैचुरेटेड Mm. बट आई डू लाइक कोनन Okay. Mm. एंड इन इंडियन में आई लाइक केनी कन्नन गिल Mm. और ये बहुत कंट्रोवर्शियल होगा बट Mm. आई लाइक कपिल शर्मा बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस सेंस Yeah. Yeah. कंसिस्टेंसी Mm. Mm. और मैंने उसको लाफ्टर चैलेंज में भी देखा जब मैं छोटी थी एंड ही इज जेन्युइनली टैलेंट ही इज Yeah. जेन्युइनली I know, like he has good improv or like timing sense also. Na? Like he can just pick up stuff and he like I mean, जैसे वो tap the thing that you mentioned, उसका tap must on है. He can take anything and he can make it funny, right? Yeah. या एंड मतलब उसको उसको प्रैक्टिस है रियल टाइम मतलब अभी कैसे मैं पंच लाइन निकालूं और हाँ उसको रियल टाइम विट की प्रैक्टिस है हाँ और हाँ. वो दिखता है वो स्क्रीन पे भी दिखता है और जब लाफ्टर चैलेंज में मैं देखती थी इंडिया ही में जो लाफ्टर चैलेंज में जितने भी कंटेस्टेंट्स थे एक्चुअली Hmm. everybody is extremely witty and extremely Yeah. talented and मैं सबको ही look up करती हूँ but Kapil Sharma has taken that and created a whole business on that तो Uh-huh. वो पक्का पक्का इंडियन ह्यूमर जो है ना वो कपिल शर्मा का ही है What मेरे about को ऐसा nee, what about Kenny and this thing Kanan, as you mentioned? Like, what do you like about their this thing comedy? I think Kenny और Kanan have also have that Indian relatability factor Kenny मुझे इसलिए पसंद है because he created that वो जो उसकी जो videos थी ना बिस्वा के साथ हाँ, uh, कनन का ना that हाँ one. सॉरी कनन का या I know what you're talking about those pretentious movie reviews. हाँ 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 तो मेरे को वो मेरे को एक बहुत न्यू चीज लगी थी एंड मेरे को उस टाइम से ही कन्नन और बिस्वा दोनों ही पसंद है और केनी आई लाइक बिकॉज ही ब्रिंग्स म्यूजिक एंड ही राइट्स सॉन्ग्स एंड ही ब्रिंग्स समथिंग न्यू That's तो something इसलिए मेरे that को ये you दोनों also enjoy, काफी na? अच्छे Like, लगते हैं that's something that you also are हाँ trying to do, like with music and bring something different into your thing. हाँ हाँ कि मतलब कुछ नया करो मतलब उसमें चाह है कि मैं कुछ नया लाऊं अपनी ऑडियंस के लिए मेरे को वो अच्छा लगता है I love that also. Like, I mean, see, bringing in unique stuff adds a lot of value, right? Like, I mean, think about content creation itself, like not comedy, but like, I mean, finance. Like, finance with Sharan started his own format, which is sketch. And like talking about finance by doing that. Because of him, so many people started copying. And abhi sabhi log, if you take any finance creator, they'll be doing like some sketch with this with reels, right? So he made it mainstream like that, and that's why he's getting all the bigger deals, and he's on the billboard, and he's like million and all those things. फर्स्ट मूवर एडवांटेज Exactly, man. सही है I wish I had that. Yeah, किसी और चीज में मिल ही जाएगा देखो true. हाँ, देखते हैं, hopefully. Knock on wood. So, uh, how do you create content, like from researching to like shooting and shipping content? Or I'm talking about YouTube. Like, what's your process with respect to like creating YouTube videos? Because I see you do a lot of research and stuff also, na? Build a script and all. Like, what's your flow? अभी तक जो था हाँ. मेरी रिसर्च एक्चुअली कंटेंट जो मैं कंटेंट डालने वाली उससे ज्यादा होती है कि क्या चीजें मुझे नहीं डालनी चाहिए अच्छा. मेरा ज्यादा टाइम उसमें जाता है और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स आई शूट अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड आफ्टर शूटिंग आफ्टर एडिटिंग आई रियलाइज फक भाई मैं ये नहीं डाल सकती क्यों? मतलब ये अच्छा. हाँ. इट्स जस्ट आई कांट इवन से आई कांट put it because it's so offensive. Okay. It's so offensive to so many people. तो हाँ. मेरा ऐसा अब मेरा रिसर्च का ऐसा हो गया है कि I am trying to do minimal research because I'm not educated enough to speak on a topic Okay. is very educational. हाँ. तो अब मैं वो रिसर्च वाला पार्ट एकदम हटाना चाह रही हूँ अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं बस जोक ही लिखूं और पंच लाइन्स ही लिखूं हम्म. एंड बाकी तो आई कीप रीडिंग बुक्स और ये सब तो वो लेटेंट नॉलेज मिलती रहती है हम्म. पर रिसर्च अब मैं इतना नहीं करती हूँ But don't you think like you mentioned you want to focus on comedy and stuff, like, but there is comedy with all these data and all these numbers and all people like being like take Dave Chappelle.
he talks हाँ, about like this thing with that African American this thing history and like whatever happened, he brings in people. He then like he insults people also. So don't you want to go into in that direction with research? Like, don't you think research can help you that way? ब्रो डेव chappelle ने ना जब ये सब ज्ञान बोलना स्टेज पे स्टार्ट किया था तब वो कुछ बन गया था। उसके बाद चालू किया उसने। हाँ, वो भी है। तो अभी अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, जैसे जैसे भगवान की मेहर होगी वैसे वैसे करेंगे। जैसे आई रिमेम्बर हिज क्रैक वाला जोक, क्रैकर दिस थिंग वाज दैट लाइक क्रैक नेबरहुड वाला जोक, ही इज लाइक दिस थिंग पर्सन व्हेन लाइक दैट, ओह फन, या आई लव पहले पहले डेव chappelle भी एक पीनट बटर क्रैक सैंडविच ही बनाता था वो। इट। he didn't crack very intelligent jokes when he started, आई नो। but I think वो ग्रोथ होता है ना हर कॉमेडी, जैसा अभी जाकिर खान भी है, उसका जो नया स्पेशल है इट्स सो इमोशनल नाउ because he's reached that place where he can talk about other things. I think it's again like that, right? Like it's like one for the audience and one for you. Like हाँ because हाँ at the end of the day, like I mean, Dave Chappelle, all these Zakir Khan, everybody, they all started off with like massy content, and uske baad they हाँ started creating for themselves. Acha, I want to talk about this thing with that activism. Oh, I want to talk about like, emotional content and everything. No. हाँ Um, हाँ, I guess that वही कि मतलब कितना अपने लिए कितना दूसरों के लिए। mhm. So, okay, then tell me about like what goes into a good video. Like, I mean, how do you edit like a video and what this thing? What goes into a good video? For me personally right now, Mm-hmm. script goes into a good video। स्क्रिप्ट मेरी बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए। अच्छा. और then editing is something that I don't want to waste a lot of my time in, Mm-hmm. because just मेरे को लगता है कि जब मैं एडिट करती हूँ, मतलब मैं ही करती हूँ, पर मैं जब एडिट करती हूँ पर तब आई कैन ऐड मोर पंच लाइन्स वाइल एडिटिंग, बट हाँ. आई स्टिल वांट टू कीप इट मिनिमल। और मैं ट्राई करती हूँ कि स्क्रिप्ट में ही सबसे ज्यादा पंच लाइन हो, बिकॉज ये एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है। Mm-hmm. तो अभी तो स्क्रिप्ट एंड अ गुड टॉपिक, और एक ऐसा टॉपिक जो चल जाएगा। हाँ. कि जैसे जैसे मेरी एक वीडियो थी रोस्ट ऑफ बॉम्बे इन्फ्लुएंसर्स। I remember. Hmm. अब वो बहुत लाइक इट वेंट ऑन, लाइक इट हैज अ लॉट ऑफ व्यूज, बट हाँ. मेरे को नहीं करना है वो अभी। आई डोंट वांट टू रोस्ट बॉम्बे इन्फ्लुएंसर्स। हाँ. मतलब वो रोस्ट था भी नहीं, तो मेरे हाँ. को पता था कि वो वीडियो चलेगी, क्योंकि बॉम्बे इन्फ्लुएंसर्स को कोई गाली देता है तो लोग देख ही लेते हैं। हाँ. हाँ. तो इट्स लाइक दैट कि तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम कमीने इनफ हो कि कुछ भी कर लोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चल सकता है, इसको गाली दूंगा तो चलेगा, कट्टर हिंदू बन जाऊंगा तो चलेगा, ये वो। तो आई थिंक देन यू कैन मैनेज, बट Yeah. वही बात आ जाती है ना कि व्हाट यू लाइक टू डू। True. Yeah. How, like, I mean, but is it required? Like, I mean, this is a question that I have, like, randomly. You mentioned about like ye cutter Hindu, yeah, like roasting, super influencers, etc. But do you have to get dirty in order to get a lot of views? Like, what are your thoughts on that? Like, do you have to pick a particular side or be polarizing or like be like say patriarchal or like even feminism, like going hardcore into that? Do you have to pick a particular flag and of a particular side? Only then you'll grow? What are your thoughts? See, roasting community started because the roaster was very passionate about, इसकी तो उतार के ही रखूंगा। आज तो ये गया तो the community started because of that, and कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वो कम्युनिटी अभी भी थ्राइव कर रही है। लोग अभी भी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पर हाँ. मुझे मतलब मैंने अब तक अपनी वीडियोस में वो किया नहीं है एक्सेप्ट इन थंबनेल। Hmm. मुझे पर्सनली वो करना पसंद नहीं है, ना ही मैं आगे कभी करूंगी। मैंने वीडियोस बनाई है वैसी और डाली नहीं है, Hmm. पर आई थिंक नाउ सिंस आई हैव रिसीव्ड सो मेनी व्यूज एंड आई एम नॉट अ मेन स्ट्रीम यूट्यूबर, आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग Yeah. एंड पीपल आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि ये रोस्ट वोस्ट करना कोई महानता का काम नहीं है, कोई तुम्हें परमवीर चक्र नहीं मिल रहा है दूसरों को गालियां देके।
I think people now also realize कि you can roast without being mean. मतलब जैसे एंडी सैमबर्ग करता है ना Oh, I अपने love him. Yeah. Yeah. He rose. I mean, I don't mind getting roasted by Andy Samberg. Come on. Yeah. He's fucking amazing. Yeah. बहुत सही है यार मेरे को बहुत पसंद है कोनन एंड एंडी सैमबर्ग तो मतलब Golden children of comedy. हाँ डेफिनेटली हाँ. 100%. So, okay, tell me about this. Like, how hard is it to come up with ideas for your content, like for comedy, and like where do you find inspiration and stuff from? Because again, coming back to the this thing previous thing, wherein like I mentioned, like you post so many things a day, and you videos and all that. You do videos, you do stand up, and now you're planning to do another form of content on YouTube. So, how do you get ideas? पार्टी करना बंद कर दो इसकी ना एक स्टोरी है पता है एक बार ना जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग कंटेंट तो एक बार ना मैं एक पार्टी में गई थी आई वाज विद माय फ्रेंड्स एंड देयर वाज दिस गाय एंड ही हैड हिज ओन कंपनी ही वाज अ ग्राफिक डिजाइनर Okay. so he had his own company and I just want to know कि how कैसा होता है how it is to run a company तो मैंने उससे पूछा कि हाउ डू यू डू इट एंड वो मेरे को बोलता है कि ये सब ना पार्टी वार्टी करना बंद कर दो और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ तू क्या कर रहा है इधर तू भी तो है ना इस हाँ. पार्टी में हाँ. पार्टी ऐसे मतलब फालतू में ज्ञान तो जा रहा है पर वट एवर ही सेड वाज ट्रू कि हाँ. या यू फॉर राइटिंग मेरे को सबका नहीं पता मेरे लिए फॉर राइटिंग I need a space and I need a lot of quiet and peace and just not talking to anybody for like days. हाँ. And then I know I can create good content. Like you need the space in your brain कि तुम्हारा दिमाग खाली होगा तभी तो कुछ नया थॉट्स आएंगे तो हम्म. अब मतलब मैंने अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग सी कर ली है जो बाहर वाले को बोरिंग लगेगी बट इट वर्क्स फॉर मी Yeah, I mean, as long as it works for you, right? And you mentioned about script tagdi honi chahiye, na? Like, I mean, like, so do you write each and everything in your script, or do you keep it like a flow and free flowing, like you put your creativity wherein as you're speaking, or do you keep it like to the dot? यहाँ punchline आएगा, ये punchline मैं बोलने वाली हूँ, ये ऐसा होगा. What do you do? अब पहले नहीं करती थी मैं ऐसे टू द डॉट पहले नहीं लिखती थी मैं पर अब जब मैं टू द डॉट लिखती हूँ तो मेरे को वो ज्यादा बेटर लगता है बिकॉज ऐसे रियल लाइफ में तो हम कुछ भी जोक मार लेते हैं वो हम्म. दोस्त तो किसी भी चीज पे हंसी देंगे पर हाँ. पूरी ऑडियंस को हंसाना तो यू नीड अ बेटर आइडिया ऑफ और कैमरे के सामने भी यू गेट अ लिटिल नर्वस सो हम्म. अब आई नीड एवरी सेकंड का मतलब एवरी सेकंड का मैं लिखती हूँ कि इस पे ये होगा इस पे मेरी आंखें मैं ऐसा एक्सप्रेशन दूंगी ऐसा एक्सप्रेशन दूंगी आई राइट एवरीथिंग नाउ हाँ. But then, like, doesn't that become like does it look very scripted uske baad? Like, what do you think? Does it become very rigid for you? I'm just thinking out loud because, like, I'm saying, like, from my experience, I've tried to do with script and without with flow. And like these podcasts, I've strictly made it so that I don't want to put any script. I'll keep a flow. I have these points, and I have a conversation with you, and I bring in these things. Like as we're talking, ye wala point, the script wala point, I bring in those. But when I'm doing long form videos, I need to have it to the dot, like with that thing. So, but I've seen both of these things, but I want to know from you. आई थिंक बिकॉज फॉर यू सिंस यू अगर मैं भी लोगों को इंटरव्यू करी होती है और पॉडकास्ट करी होती तो मैं भी तब जैसे तूने कहा था लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए एक script हाँ. से सेम मुझे टू दैट मच अटेंशन बिकॉज जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक ऐसा टाइम आएगा बीच में जहाँ पे लो हो जाएगा दोनों कुछ नहीं बोलेंगे हाँ. ऑकवर्ड साइलेंस हो जाएगा तो हम्म. ये ऐसे होता है नॉर्मल तो कॉन्वर्सेशन में समझ आता है पर जब यूट्यूब पे तुम वीडियो डाल रहे हो तो वहां पे अगर डिप आ गया तो फिर लोग तुम्हारी वीडियो छोड़ के कुछ और देख लेंगे क्योंकि अटेंशन स्पैन नहीं है लोगों के अभी हाँ. 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 और जो दूसरा जो तू बोल रहा था कि इट गेट्स अ लिटिल मैकेनिकल हाँ. मेरे को भी पहले ये लगा था कि हाँ अगर मैं ऐसे करूंगी तो नेचुरल नहीं होगा बट द थिंग इज कि वो भी एक क्राफ्ट है मतलब जब तुम वो करने लगोगे ना इट्स लाइक एक्टिंग हम्म. मतलब लाइक एक्टिंग ही है वो हाँ. इट्स एक्टिंग हाँ. हाँ. तो हाँ. वो भी फिर सीखने का मतलब उस you get interested in that zone also that you want to learn how to do this and you want to learn a new skill it's a skill basically हम्म. so वो थोड़ा सेट हो जाता है आई थिंक एक आध वीडियोस के बाद ना
You feel That's good something. about it. Is that something you want to do eventually, like acting and getting into Bollywood and all? ऐसे Eventually. सोचा नहीं है मतलब मैं कौन बॉलीवुड में मेरे को लेके, हाँ महेश भट्ट बैठा ही है, रागिनी कब आएगी हमारे बॉलीवुड में, कब हम करेंगे? अरे ये Prajakta Kohli can get in, like, why can't you? She's also an influencer. She's also from कोहली internet was pop. in Bollywood. Yeah, she's been there. That movie, what do you call that? क्या ये Varun Dhawan and Anil Kapoor and all these Jug Jug Jio, exactly. उसमें है ना? She's Varun Dhawan's sister in Jug Jug Jio. And even, अच्छा yeah, take Viraj Gehlani also. He's also in one of the things. Like a lot of these influencers. I heard even financial with Sharan, that Sharan dude, he's gone to Mumbai now just to try his hand on acting. Like he है? wants to get into acting. Like someone told me about it. But apparently he asked was some of the people, I want to get into acting. That's my goal. And now he's in Mumbai. So just connecting the dots. So अरे मुझे भी कोई करीना कपूर बना दो। मतलब मिल जाए तो मना थोड़ी करूंगी। Who is gonna say no to a full-fledged movie? You get so much exposure, even if इतना सा रोल है। हाँ हाँ। बट नहीं, पहले पर मेरे को अपना पहले चैनल करना है, बाद में आते हैं। अभी महेश जी का कॉल मैं बाद में उठाती हूँ थोड़ा। हाँ, got it. So tell me about this. Like, what are some learnings that you've had as a creator? रोज ही एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस ओनली यार। आई थिंक तेरे को भी लगता होगा ना। वो तू बता, व्हाट आर द लर्निंग्स यू हैव हैड एज अ क्रिएटर? I think I can tell you two things, like from with respect to managing creators and with creators. Like in my job of managing creators, I understand like how hard it is for a creator. Before I even got into creating, when I was managing them, I understand how much time it takes into writing a particular post. It's God, I used to think, acha, haan, I just tell them and they send it within like 10, 15, sometimes within an hour whenever we need something. So be like, haan, very easy. Now that I started creating, I understand how hard it is. Like I'm doing these 3 steps, 3 tips wale videos these days randomly. I just got up one day, I'm like, let me do this. And I know how hard it is to even get those 3 things, right? या Yeah, fuck. So या don't take this lightly. That's my learning. Like, I mean, don't take anything that people do lightly because everything is fucking hard. Yeah. या जैसे there's this quote by in Race movie ना, शाहरुख का, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता. हाँ हाँ Exactly. कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता. Everything is fucking hard. That's या what I learned. What's your learning? आई थिंक मेरी लर्निंग रिस्पेक्ट टू, मतलब तेरी लर्निंग अलग होगी ऑब्वियसली, पर मेरी सिंस आई एम मोर इनटू राइटिंग, Mhm. मेरी लर्निंग ये अब इस पॉइंट पे ये आ चुकी है कि मेरे को ना हिंदी सीख लेनी चाहिए। हाँ, okay. क्योंकि मेरी स्पोकन हिंदी इज ओके, बट व्हेन आई राइट आई थिंक इन इंग्लिश एंड देन आई ट्रांसलेट। हाँ. अब वो ना मजा नहीं आ रहा उसमें अब। वो सही नहीं होता। यू हैव टू नो हिंदी वेरी वेल, और रोज ही कुछ ना कुछ नया निकल आता है कि मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये सीखना है, वो सीखना है। तो every day is a learning process. I think for non writers also, and even a person who's working in a farm, yeah, person who's working in I don't know, the train station. Every day is a learning process in general. What are your thoughts on, like, I got a thought from when you were speaking. So you were saying like writing is hard and like you need all these things. What are your thoughts on like generative AI? Like, have you used that for your content ever, like Chat GPT, etc.? And do you think it could be useful? Like, what are your thoughts on that? देखो, it can be useful when it's more intelligent than me. अभी मेरे को चैट जीपीटी पे ऐसे कोई आइडियाज नहीं मिले हैं या पढ़े हैं मैंने, जो मैं खुद नहीं सोच सकती थी, Hmm. या जो मैंने सोचा उससे अच्छे हैं। Hmm. या इट्स गुड फॉर फिलर जो करना होता है ना, जो कॉपी राइटिंग में जो फिलर होता है। जैसे हाँ. हम लाइक आई वर्क इन डिजाइन, तो हम कॉपी राइटर्स को ये दे देते थे कि टास्क दे देते थे कि इतना लिखना है। अब वो एलिमिनेट हो चुका है। वी कैन जस्ट गो ऑन एआई, मिडजर्नी, व्हाटएवर, एंड गेट इट डन आवरसेल्व्स।
तो वो एक आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट, पर इतना मेरे को कुछ खास नहीं लगता. Got it. Perfect. On that note, we are done. But before that, wait, I need to go and get something. Like I usually play this game with all the guests. Give me a minute. Chalo. So this game is called Rapid Brew, wherein I shuffle a few cards and I अच्छा. ask the question that comes on top, and you just have to answer in 12 seconds or less. Yeah. अच्छा. Yeah. ठीक. So first wala, what's one tradition you cherish? It's very basic. Don't worry. Yeah. What's one tradition you cherish? इंडियन ट्रेडिशन. Anything, anything. Like it could be your tradition or something that you अच्छा. do. ओ, Anything. धूप सेकना. uh, okay. हर सुबह. हर सुबह सुबह की धूप. तू वैसे बैंगलोर में रहता है, उधर इतनी ठंड नहीं है, मे बी यू वोंट अंडरस्टैंड. Uh, व्हाट्स what योर ट्रेडिशन? mine? I I like what I started recently, like waking up in the morning and like recording like 3 steps to become a millionaire, 3 steps to do this. I like that now. I'm enjoying that for some reason. Yeah, so that's one. Okay. अच्छा है, अच्छा है, आई लाइक इट. What have you done to focus on your well-being recently? ब्लॉग्ड अ लॉट ऑफ पीपल. Blog. Okay, wow, nice. ब्लॉग. Name a song on your playlist that gets you energized. ब्रैम्पटन ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੱਡੀ ਵੈਰ ਚੈਲੰਜਰ, ਤੀਰਾ ਵੱਜਦੀ ਏ. I love that. What's your favorite day of the week? एक और question is संडे यार, संडे. Sunday. क्यों? सोना है मुझे. 6 घंटे सोऊंगी. Saturday क्यों नहीं सोती तू? काम होता है यार, वीडियो वीडियो का काम होता है, Hmm. ऑफिस का ना होता है. Hmm. Last. What's your go-to snack? यार मेरे को गाजर बड़ी पसंद है. Gajar is a snack? हाँ, मैं बस छील के ऐसे खाती रहती हूँ. गाजर, मूली, ऐसे कोई भी रॉ वेजिटेबल मेरे को बहुत पसंद है. शलगम, शलगम बड़ी पसंद है. शलगम क्या है? I have no clue. इट्स काइंड ऑफ अ radish, sauerkraut. चल, okay, शलगम. Let's take it. Let's take your word for it. ठीक है. शर्म आती है, मुझे शलगम नहीं पता. देखो कहाँ रहता है तू? कैलिफोर्निया रिटर्न. तो हाँ ठीक है. So anyhow, like closing thoughts. What are your closing thoughts? Why do you tell the viewers, and where can people find you? These two things. Ragini, at Ragini on Instagram, at Ragini on YouTube, at Ragini on Twitter, at Ragini on chess.com, at Ragini in Sector 17 Chandigarh. एड्रेस बता दे, नंबर भी बता दे, सब कुछ. Perfect. Perfect. And if you want to find us, you can find us on Brew Your Market, on any of the social media platforms that you use. And yeah, feel free. So see you in the next podcast. Bye bye. Bye guys.